Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 5th, as you know that we are reading a poem from your English book Tulip series, and the title of this poem is Paper Boats. Dear students, the poem Paper Boats is written by the famous Indian poet, storyteller and dramatist Shri Rabindranath Tagore. Dear students, we have read first 6 lines of this poem, and today we are going to read the last, that 7th and 8th line of this poem. As you know that this poem is written in the first person, and the speaker of this person is a child. So let's begin. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them, and the lading is their baskets full of dreams. So here in these 2 lines, the child, as the speaker of this poem is a child, so the child says that when night comes, I bury my face in my arms and dreams and thinks that my paper boats float on and under the midnight stars, and the fairies of sleep are sailing in them and loading their baskets full of dreams. So here the child says that at night he sees dreams in his sleep. He dreams about his paper boats, and in dream he is happy to know that fairies are sailing in his boats. तो यहाँ पे बच्चा कहता है कि रात को जब रात आती है तो मैं अपने बाजू में सर रखकर सोचता हूँ, मैं ये ख्वाब देखता रहता हूँ कि कैसे मेरी कश्तियाँ जो हैं वो तारों भरी रात में बहती होंगी, और ख्वाबों की परियां जो है वो उन कश्तियों में चल रही होंगी, और वो अपनी टोकरियाँ जो है उन्होंने वो कागज़ की कश्तियाँ जो है उनको अपने ख्वाबों से ख्वाबों की टोकरियाँ उनमें भरी हुई वो इन कागज़ की कश्तियों में तैर रही होंगी, वो इन कागज़ की कश्तियों में चल रही होंगी। तो बच्चा जो है वो यहाँ पे इस पोम में वो ये जो पूरी पोम जो है ये बच्चा जो है वो तस्वुर, ये सारी चीज़ें जो है वो इन चीज़ों का तस्वुर कर रहा है. इट इज़ sheer imagination of the child's mind. Sheer means complete and total imagination of child's mind, and that his paper boats are traveling a long distance, and that the clouds in the sky are racing with his paper boats in the stream. During his sleep, he dreams of fairies who sails in his paper boats with their baskets full of dreams. तो यहाँ पे बच्चा जो है ये कम्प्लीटली तस्वुर ये चीज़ें कर रहा है कि किस तरह से वो नदी में अपनी जो कागज़ की कश्तियाँ हैं उनको एक एक करके बहाता है, और किस तरह से जब वो स्ट्रीम में जब वो नदी में बहती हैं, जब वो जिस तरह से वो स्ट्रीम में नदी में तैरती हैं, उसी तरह से आसमान में जो बादल हैं वो उसी तरह से तैर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी दोस्त ने उनको भेजा है उन कागज़ की कश्तियों के साथ मुकाबला करने के लिए. और बच्चा कहता है कि जब मैं सोता हूँ तो किस तरह से मुझे ये ख्यालात आते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि जो परियां हैं वो मेरी कश्तियों में सैर कर रही होंगी, और उन्होंने उन कश्तियों को अपने खूबसूरत ख्वाबों की टोकरियों से भरी हुई होंगी.